Hello students. Today I am going to teach you chapter 4 decimals. Topic is division of decimals. Division by 100, 10 and 1000 etc. Division by 10, 100 and 1000 etc. For dividing, what are the steps? Write the number without a decimal point. Step 1. And step 2 is shift the decimal point as many places to the left as there are number of zeros in the multiplier. अब जितने मल्टीप्लायर सपोज 100 है तो उसमें जीरोस कितनी है 2. हाउ मेनी जीरोस 2. देन द नंबर इज 128.2 डिवाइड बाय 100. नंबर ऑफ zeros in the divisor 100 is 2. So shift the decimal points. Shift the decimal point to 2 points towards the left. Towards the left. Okay. Number is 1 point. How much? 128.2 divided by 100. Then as you see there are 2 zeros in the divisor. Then these two digits 2 and 8 will be shifted this side to here. This is right side, your right side. After dividing 128.2 by 100 you will get 1.282. ये 2 इस 2 के आगे ये हो जाएंगी 2 और 8 282.282. ओके. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 4.3. You suppose I have taken this number I part. Question number 1 I part. 1462.20 divided by 1000. Now when you look at the divisor there are how many zeros? 1 2 3. Then how many digits from your left here? 1 2 3. These 3 digits will be shifted to your right side here, right side. Then the number will become 1.462220. Okay. Then suppose I have given number, suppose to the some here given number here on the slips. Suppose this is 1462.20 divided by 100. Now divisor is 100. तो zeros कितनी यहाँ पे 3. How many? 3. Then before decimal how many? Yes, you will shift 1 2 3. You will shift these 3 to the right side. The number will become 1 point. ये 462 यहाँ चले गए आफ्टर पॉइंट. ओके. आफ्टर डेसिमल 4622 ओके. जितने आपके डिवाइज़र में जितनी ज़ीरोज़ हैं उतनी ही डेसिमल से पहले वाली जो डिजिट्स हैं वो डेसिमल के बाद वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी आफ्टर डेसिमल. ओके. इन दिस नेक्स्ट इज डिवीज़न बाय ए नॉन ज़ीरो होल नंबर. डिवीज़न बाय ए नॉन ज़ीरो होल नंबर. नॉन ज़ीरो ये नॉन ज़ीरो है. नॉन ज़ीरो होल नंबर. डिवीज़न बाय a non-zero whole number. 14.8 divided by 2. Here what will you do here? You have to follow the steps to divide the decimal number by a non-zero whole number. Divide the decimal number by the whole number as usual way of division, ignoring the decimal point. Then step 2 will be insert the decimal point in the result quotient such that there are equal number of decimal places in the quotient as in the given decimal number, that is dividend. आपने क्या करना है? इग्नोर कर देना पहले. जैसे 14.8 है, इसको इस डेसिमल को इग्नोर करके आप 148 बना लेंगे इसको और डिवाइड करेंगे 2 से. ओके. डिवाइड करने के बाद क्या है कि इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट इन द रिजल्ट क्वोशिएंट such that there are equal number of decimal places in the quotient as in the given decimal number dividend which is divided by the non-zero whole number. अब ये डिविडेंड है आपके पास. ये क्या है? डिविडेंड. इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड. और ये डिवाइड का निशान है, डिवाइड. और दिस 2 इज कॉल्ड डिवाइजर. ओके. एंड यू हैव गॉट आफ्टर डिवाइडिंग यू हैव गॉट क्वेश्चन. दिस इज हाउ 74. अपनी 74. देन इग्नोर डेसिमल and divide by 2.
I have ignored decimal. I have written 14.8 as 148 divided by 2. I have got 74. I have got 74. Now 74. Now decimal places in the dividend 14.8 कितने decimal places? 1. decimal के बाद कितने नंबर है? 1 है. तो put the decimal point in the quotient one place from the right. from the right. राइट से एक छोड़ के, राइट से एक छोड़ के तब आपने डेसिमल लगा देना. राइट से छोड़ना है. ओके, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना. अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते तो राइट से आप 2 डिजिट छोड़ के तब डेसिमल लगाते हैं. Okay, in this way you will this question can be also solved by other method also. Other method for solving this, or you can solve in this way. 14.8 divided by 2. You can convert this decimal into fraction. It will become 148 divided by 10 divided by then 2 के नीचे कुछ नहीं होता तो वो 1 माना जाता है. क्या माना जाता है? 1. डिनोमिनेटर क्या माना जाता है? हमेशा 1. 0 नहीं मानते इसको, 1 ही मानते हैं. अब आपने क्या किया, दिस डिवीज़न साइन आपने अगले पहली वीडियोस में देखा होगा कि जब डिवीज़न साइन होता है तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं और इस नेक्स्ट फ्रैक्शन का हम क्या ले लेते हैं? रेसिप्रोकल. वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट फ्रैक्शन. देन वी हैव जस्ट सिंप्लीफाइड विद द कॉमन फैक्टर. 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8. वी हैव गॉट 74 upon 10. Now this can be written as 7.4. You can do in this way also. Then comes division by a decimal number. Division by a, this question which I have taught you, that is question number 2, a part. Then comes division by a decimal number. Division by decimal number, decimal by decimal. Question number 3, this can be done like this. 0.18 divided by 0.3. Convert into fractions. आप 0.18 को कैसे लिख सकते हो? 18/100 डिवाइडेड बाय 3. yes, divided this division sign. Then 0.3 can be written as 3/10. Now 18/100 you have written like as it is. This division sign is converted into multiplication. As soon as you convert this division sign into multiplication, the reciprocal of the next fraction is taken. 3/10 will be written as 10/3. Okay. Then simplify with the common factor. I have cut 1 0 with 1 0. 10 1 ja 10, 10 10 ja 100. Then 3 1 ja 3, 3 6 ja 18. You have got 6/10. 6/10 can be written as 0.6. In this way you will solve the questions of your exercise here in the book. Exercise 4.3. You will solve exercise 4.3 yourself. You will solve very carefully in your notebook. Okay, first of all you can revise the examples also. Examples are also given here. Okay, thank you. You can use any method for solving the question. I have given you 2 methods. And please cross check the answers from the answer key given in the end of your book. Okay.